Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, the last topic that we discussed was about the simple microscope, and after magnification factor, we have to find out what is the resolving part of, say, a simple microscope or a compound microscope. Resolving part is the ability of an instrument to distinguish between two closely placed objects or point sources. Resolving पावर मतलब कि resolving पावर का मतलब है कि किसी सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या एबिलिटी है कि वो उसमें माइनर डिटेल्स दिखा सकती है. मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया को देख रहे हैं, वायरसेस को देख रहे हैं, तो उसमें क्या उसमें सलाहियत है, कितना वो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि आप क्लियरली देख सकें कि मुख्तलिफ जो पॉइंट सोर्सेज हैं या जो मुख्तलिफ दो चीज़ें जिनको आप देख रहे हैं उनको वो रिजॉल्व कर सके और वो क्लियरली आप देख लें. नाउ कमिंग अगेन, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी टू सी हाउ क्लियरली टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड. मसलन दो चीज़ें बहुत साथ साथ रखी हैं और माइक्रोस्कोप जो चीज़ें देखता है, देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई. You cannot see them with the naked eye, but when you use the microscope, then that small bacteria or virus, is magnified so many times that you can see it. And now what is the ability of the microscope to distinguish between small details? मसलन उसमें जो छोटी छोटी तफासील है, कितनी तफसील आपको दिखा सकती है, वो इसकी रिजॉल्विंग पावर है. मतलब सेल वॉल किधर है उसकी, सेल मेम्ब्रेन किधर है उसकी, सेल की उसका कोड किधर है उसका, और इट शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश. सो रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश, यानी अलग करना बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेज. जो भी दो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं क्लोजली प्लेस्ड, मिसाल के तौर पे उसमें सेल है और सेल वॉल है, उसमें सेंटर है उसका, और पॉइंट सोर्सेज. और इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की एबिलिटी है टू शो द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की वो माइनर डिटेल्स दिखा सके. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो हैं टाइनी हैं, जो नन्हे ऑर्गेनिजम्स हैं, we use an instrument of high resolving power और high resolution. So जितने ज़्यादा छोटी चीज़ें उसमें आपने देखनी है माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो उसकी माइक्रोस्कोप की resolving power should be much more. It should have a high resolution to distinguish between different objects and to show the minor details. So this was regarding the resolving power of the simple microscope, and it is also valid for the compound microscope. Now the next topic that we have to study is the compound microscope. Now compound simple microscope used only one kind of magnifying glass or used only one convex lens. A compound microscope uses two convex lenses. Now the definition of a compound microscope is an optical instrument, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल में आता है, विद हाई मैग्नीफाइंग पावर. उसकी मैग्नीफाइंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. So what is a compound microscope? A compound microscope is an instrument which can see small objects with high resolution, with high magnifying power. It uses two convex lenses called objective and eyepiece. इसमें दो लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है जिसे देखते हैं. Only one convex lens is there in a simple microscope. A compound microscope has two lenses. One is the eyepiece, the other is the objective. ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल करें. आई पीस इज दैट लेंस विच इज जो कि आंख के नज़दीक होता है. सो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हुआ? ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेस वन मैग्नीफाइंग लेंस, वन कन्वेक्स लेंस. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस टू.
It uses two convex lens. One is known as the eyepiece, और eyepiece आँख के नज़दीक वाला देखने वाला अज्जा है उसका, and the other is objective lens, और objective lens जो है वो object को देखने के लिए इस्तेमाल करता है. Okay, now coming down to the construction of a compound microscope. A compound microscope, जैसे मैंने बताया, please do not get mixed up or do not get confused over this thing. It can simply has two lenses. अगर उसमें दो लेंस लगे हुए हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक लगा हुआ है तो सिंपल है. नाउ दो लगाने के लिए you need a tube, so there is a small tube which is known as the body of the compound microscope, जिसके एक सिरे पे आई पीस है. आई पीस वो वाला लेंस है जो आंखों से जहाँ से देखते हैं, and the other one is known as objective lens. It is that lens which is used to see the object. एक ये this small tube जिसमें वो लगाए गए हैं उसको उसकी बॉडी कहते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एक स्क्रूज लगाया होता है उसको, ताकि उसको आप आगे पीछे कर सकें. दैट इज ऑन ऑब्जेक्टिव टरेट. नाउ दिस इज, ये इसके साथ एक बाजू लगाया गया ताकि इसको ट्यूब को पकड़ने के लिए, बेस के साथ होल्ड करने के लिए, रखने के लिए एक बाजू लगाया गया. सो इट्स अ ट्यूब. At one end is the eyepiece, at the other end is the objective lens. It has an arm and a base. Base के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें आप रख सकते हैं. यहाँ पे इसकी कोर्स फोकसिंग नॉब है. ये एक नॉब लगा हुआ है जो कि इसको कोर्स मैंने बड़ी ज़्यादा जो है ना ज़्यादा इसमें रफ किस्म की फोकसिंग कर लेता है, और ये फाइन फोकसिंग का नॉब है. सो दिस इज फाइन फोकसिंग. कोई चीज़ को देख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव लेंस को आगे पीछे ला के, ज़्यादा अगर आगे पीछे लाना है तो फिर कोर्स फोकसिंग नॉब इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा सा बारीक सा आगे पीछे लाना है तो फाइन फोकसिंग नॉब इज यूज्ड. दिस इज द बेस ऑन जस्ट अंडरनीथ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज एन ऑब्जेक्टिव स्लाइड. यहाँ पे स्लाइड रखी थी, और स्लाइड रखने का यहाँ पे एक इंतज़ाम होता है कि आप स्लाइड को उसमें रख लें. स्लाइड क्या होती है? जिसके ऊपर आपने सैंपल रखना है. एनी सैंपल दैट यू यूज is placed over here, and this slide is placed on a objective stage. एक स्टेज सा बनाया हुआ है, ऐसे एक फ्लैट सी प्लेट सी, उसके ऊपर आप स्लाइड रख देते हैं, एंड इसके नीचे रोशनी लगाते हैं ताकि आप माइनर डिटेल्स देख सकें, ताकि आप उस जरासीम को, बैक्टीरिया को, जो उसको भी स्टडी करें दे. सो दिस इज अ कंडेंसर लैम्प, जस्ट लाइक द कंडेंसर लैम्प्स दैट वी स्टडीड अर्लियर. सो दिस अरेंजमेंट फॉर कंडेंसर लैम्प. ये एक बेस है, यहाँ पे स्लाइड रखी जाती है. ये स्लाइड को रखने के लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टेज बनाया गया है. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, ये इसकी बॉडी है, ये बाजू है इसको होल्ड करने के लिए इसके साथ. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसका फ़ायदा क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? वेयर इज इट यूज्ड? नंबर वन, इसमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होती है. इट गिव्स यू ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन सिंगल लेंस. क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज एक लेंस भी, ऑब्जेक्टिव लेंस भी उसको इमेज बनाता है जो कि बड़ा होता है, और फिर ये भी आई पीस भी बनाती है जो उसको मज़ीद बड़ा कर देती है. सो इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन सिंगल लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ. अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करते हैं, इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़ी होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से कम होती है इसकी फोकल लेंथ. और आई पीस की जो होती है वो कुछ सेंटीमीटर होती है. आई पीस हैज़ अ कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ. आई पीस की फोकल कहती है एफ ई कितना है, ए फ्यू सेंटीमीटर्स तक होती है. सो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो उसकी फोकल लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर. जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ फ्यू सेंटीमीटर्स है, इसकी लेस देन 1 सेंटीमीटर है. नाउ लेट अस सी द रे डायग्राम ऑफ हाउ डज इट मैग्नीफाई. मैग्नीफिकेशन कैसे इसकी होती है? नाउ प्लीज लुक हियर. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्ट PO, एंड इट मेक्स एन द रेज कमिंग फ्रॉम इट मेक्स एन इमेज I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का ये इमेज I1 बना रहता है, विच इज लार्ज
which is real and which is not erect. It is erect नहीं होता, ये उल्टा होता है, inverted होता है. So this objective lens makes an image of जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका image बनाता है और इसको बड़ा करके दिखा देता है यहाँ पे. It is placed in such a way between f and 2f, and so the image is placed over here beyond 2f, and which is enlarged and which is inverted and which is real. So eyepiece जो है वो उस image को object लेती है. Eyepiece जो है वो that takes this image as the object, and hence it produces, it is adjusted, the image is adjusted in between the principal focus and the optical center, so it produces a large image which is the final image, which is virtual, which is magnified and which is erect. So this principle is used over here. एक compound microscope, what does it do? एक image यहाँ से बन गया, ये image दूसरे eyepiece के लिए जो है ना objective बन गया, object बन गया, और उसने इसको enlarge image produce कर दिया, जो कि उसी तरीके से जैसा image है वैसा ही बना, which means magnified. It is erect and it is not inverted. It is erect and very magnified and is virtual. So objective क्या करता है? Objective lens forms image I1. ये I1 बनाया inside focal point of eyepiece. Eyepiece के focal point के दरमियान, यानी principal focus and optical center के दरमियान. Image X as object for eyepiece, and final image I2 is formed outside the focal point of the objective lens. Magnification factor कितना इसका है? M is equal to L over F naught. Means magnification factor है length of the tube जितनी भी है इसकी, ये length of the tube है over focal length of the objective lens की objective lens की कितनी focal length है, into 1 plus D over FE focal length of the eyepiece, where L is the length of the tube, D is the distance of least distinct vision 25 centimeter, L is equal to L जितनी जो है वो हम FE यानी focal length of the eyepiece plus focal length of the objective lens के बराबर है. So magnification factor is M is equal to L over F naught into 1 plus D over FE. ये इसका. Now coming again, दोबारा रिवाइज करता हूँ आपके लिए for recapitulation. Resolving power. One more point, what are the uses of a compound microscope? Let us go over this also. It is used to study bacteria, viruses, very small things, and it is used for research in biology, microbiology, genetics and geology. यानी रिसर्च करते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जिनको हम आँख से नहीं देख सकते कि ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती हैं, कैसे उस पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स पड़ते हैं चीज़ों के. So these are the use. Now coming back to this thing, what is the resolving power? रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है जिसके तहत वो माइनर डिटेल्स आपको दिखा सकता है. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेस, और इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू शो माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशंस. For example, in order to see tiny organisms, we use an instrument of high resolving power or high resolution. So क्या हुआ? What is the definition of it? Resolving power क्या हुआ? It is the ability of an instrument, किसी भी instrument की सलाहियत है to distinguish between two closely placed, और दो अगर ऑब्जेक्ट्स नज़दीक रखे तो दोनों को वो वाज़ह तौर पर अलग-अलग दिखा सकता है या ये माइनर डिटेल्स आपको बता सकती है. So now the next topic is about the compound microscope 12.13. What is a compound microscope? Last time we studied about simple microscope. A simple microscope consists of one lens only. A compound microscope consists of two lenses. One is known as the eyepiece जो आँख के नज़दीक है, the other is known as the objective lens जो कि ऑब्जेक्ट जिसको देखना है उसके नज़दीक है. And what is the definition? An optical instrument used to see small objects with high magnifying power. It uses two convex lenses called objective and eyepiece. And what is the construction? The construction of a compound microscope is that it consists of a tube with eyepiece at one end and an objective lens at the other. यहाँ पे एक आर्म लगा होता है to hold the tube with the base. On this arm is a coarse focusing knob. ये इस लेंस को फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं आगे पीछे लाने के लिए एक जो है वो एक
कोर्स फोकसिंग नॉब जो कि जल्दी से ज़्यादा मूवमेंट आपको दे देता है लेंस को मूवमेंट की, और ये फाइन फोकसिंग नॉब है जो कि बारीक आपको फोकसिंग प्रोवाइड करता है, थोड़े से डिस्टेंस के लिए मूवमेंट देता है ऑब्जेक्टिव लेंस को। दिस इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव स्टेज। इसके ऊपर जो है ना, ऑब्जेक्टिव स्टेज के ऊपर जो है ना हम स्लाइड रखते हैं जो जिसके ऊपर वो सैंपल पड़ा होता है जिस बैक्टीरिया को देखना है आपने वो। नीचे रोशनी का इंतज़ाम है लाइट का, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से देख सकें। मेन फीचर्स क्या हैं इसके? फीचर्स ये हैं कि ये ग्रेट आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देती है देन सिंगल लेंस। 2, ऑब्जेक्टिव लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है बहुत छोटी थी, लेस देन 1 सेंटीमीटर। आई पीस की ज़्यादा होती है विच इज़ अ फ्यू सेंटीमीटर्स। एंड हाउ डज इट फॉर्म एन इमेज? जस्ट लुक ओवर हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, PO, rays of light coming from here make an image I1. This I1 is within the focal length of the eyepiece. It makes a large image of it, which is the final image I2, which is very large and which is not inverted, it is erect, and then it is of course virtual. Objective forms image I1 inside focal length of eyepiece. Image acts as object for eyepiece, ये eyepiece है, and final image I2 is obtained which is outside the focal point of the objective lens. Magnification factor is equal to L over F0 into 1 plus D over Fe, where L is the length of the tube, or length of the tube normally is equal to the focal length of the eyepiece and focal length of the objective lens. L is the length of the tube, D is the distance of least distinct region 25 centimeters, and F is the focal length of it. This is the magnification factor for compound microscope. The uses: it is used for studying bacteria, it is used for research in microbiology stuff. It is used for studying, uses are used for study bacteria and research in biology, microbiology, genetics and geology. So please go over this topic and give me a phone call if you have a difficulty, or send me a message on WhatsApp so that everything is clear in your mind. Make beautiful, clean, tidy notes of it with headings and diagrams. Thank you.